Hello friends, in today's class we will explore the idea of Buddhism as far as self is concerned. So self from the Buddhist perspective is the topic of the day. But as far as Buddhism is concerned, they talked about one master and who is the most enlightened one. And that one master, he is the most poised one. And he talks about the good virtues and he talks about nirvana and he talks about that this world is it's full of sufferings and everywhere there are sufferings. So to attain happiness means one wants to get rid of all this materialistic world and one has to leave this materialistic world for the true enlightenment to reach the purpose. So I will read some lines for you and then try to explain what exactly this is. So, beta, as far as Buddhism is concerned, and their idea of self was that the self should always seek the good of others. A true self is that which thinks of others, and it's woven throughout the teachings of the master. And the master is the most enlightened one, as I spoke. That is the Buddha. So he says the Buddha always thinks about the betterment, the welfare of the others. So in one passage, the Buddha especially, he quoted as saying, wander for the gain of the many, कि आप भटकिए ताकि आपकी भटकन से, आपका सब चीज़ों से, आपकी मेहनत से बहुतों का भला हो. Further, he says, do something for the happiness of the many and out of compassion for the world. And always the self should have compassion for whole of the world. So at the same time, beta, the Buddha teaches that suffering is a part of being and that this suffering is brought on by the human emotions of desire. Number one, beta, he talks that sufferings is a part of this life. So one should not get disturbed, one should not get perturbed because of the sufferings which one receives. हम जब भी sufferings देखते हैं लाइफ में बेटा तो हम घबरा जाते हैं. सो बुद्धिज्म ने कहा जिंदगी सफरिंग्स का ही नाम है और इन सफरिंग्स से घबराना नहीं चाहिए. इन सफरिंग्स से ही इंसान जो है वो इवॉल्व होता है और यही सफरिंग्स हैं जो इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, लर्न करवाती हैं और बुराई से दूर रखती हैं. तो सफरिंग्स का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ से बेटा. और एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में कहा कि जो सफरिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ जो हमारी सफरिंग्स हैं वो हमारी अटैचमेंट्स के कारण हैं, वो हमारी डिज़ायर्स के कारण है कि हम किसी से अटैच होते हैं इसलिए हम लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं बेटा. एंड बुद्धिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ सेज दैट if we will not control the inside desires of fulfilling needs, desires of achieving, desires of being the best, desires, ये जो मोह माया जो है, जो desires हैं, यही reason है असली sufferings का. So number one बेटा, Buddhist believed the true self वो self है जो उस master, enlightened one बुद्धा की preachings को समझता है. और ट्रू सेल्फ वो है जो कोई भी काम करता है वो कंपैशनेट ग्राउंड पे होता है. कंपैशन, दर्द, एक दूसरे के लिए भक्ति भाव, दर्द जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बताया है. थर्ड बेटा, बुद्धिज्म ने कहा कि सफरिंग्स जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं. सफरिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड देन बेटा बुद्धिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ सेज
we suffer, our self suffers. Why? Because we are attached. Number one, we are attached to others. Number two, because हमारी अनगिनत सी desires हैं. So after these points beta, we'll proceed next. In the Buddhist philosophy beta, nirvana, nirvana is a state in which the self is freed from desires for anything, because suffering is received by the desires, the more and more of desires. So he says every self, every body must, it is a must that must attain nirvana. And nirvana, he says, nirvana वो state of mind है, वो state है जब इंसान सब desires से अपने आप को मुक्त कर लेता है. जैसे गौतम बुद्धा ने खुद अपना राजपाट, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना सब कुछ छोड़ के निर्वाण को प्राप्त हुए थे और जंगल में चले गए थे. सो ही सेज जैसे ही एक ह्यूमन सेल्फ जो है वो अपने आप को वो डिज़ायर्स, अटैचमेंट से दूर करता है तो वो निर्वाणा को प्राप्त कर देता है. सो देन ही टॉक्स अबाउट बोथ टू काइंड्स ऑफ निर्वाणा, बोथ प्री मॉर्टल एंड पोस्ट मॉर्टल. प्री मॉर्टल जब तक हम जिंदा हैं और निर्वाणा स्टेट हैं, और ही प्रपोज्ड एज पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल. ही सेज दोनों निर्वाणा अटेन करना बहुत ज़रूरी है. मोर स्पेसिफिकली द प्री मॉर्टल nirvana may be linked to the idea of the ultimate good life. He says good life comes when you attain nirvana, and nirvana is detachment stage. So post-mortal nirvana may be similar to what Christian says the idea of heaven. He says जब आपकी आत्मा निर्वाण को प्राप्त करती है, पिछले जन्म का आपको कुछ याद नहीं रहता, अगले जन्म का आपको नहीं, सो आप मोक्ष को प्राप्त होते हो. इसी तरीके से बेटा बहुत सारी ईस्टर्न फिलॉसफीज़ के जैसे बुद्धिज़्म, उन जैसा बुद्धिज़्म की भी सोच है. और बुद्धिज़्म जो है बुद्धिज़्म इट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू वर्च्यूज़. वी टॉक्ड अबाउट वर्च्यूज़ अर्लियर. सो बुद्धिज़्म कहता है वर्च्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान की अच्छी लाइफ के लिए, विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन सेवरल कैटलॉग्स ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़. सो बुद्धिस्ट जो हैं ही स्पीक ऑफ द ब्राह्मण विहारा, ब्राह्मण की तरह विहार करना इस दुनिया में. दोज वर्च्यूज दैट आर अबव ऑल अदर्स इन इम्पॉर्टेंस. दीज वर्च्यूज इंक्लूड नंबर 1 क्या है बेटा? लव. लव ही सेज मैत्री, मैत्री, कंपैशन, करुणा, दूसरों के लिए करुणा, दर्द रखना. Joy is muddita, and equanimity, उपेक्षा, किसी की उपेक्षा नहीं करना. And then he talks about that love, maitri, karuna, compassion, joy. These are what are the complete package for a good self. So the path to achieving these virtues within Buddhism require human self to divorce themselves from the human emotions of desire and to put an end to the suffering. So beta, we will again repeat. Buddhism talks about sufferings. He says sufferings are a part of life. Sufferings को देख के घबराना नहीं है. He says suffering का reason जो है attachment to desires है. And he says कि एक true self जो attain करता है nirvana means detachment from desires and surface. And then he talked about a true human is that who is compassionate, thinking about others, doing things for humanity. And lastly, he talks about the virtue of love, joy, compassion, which makes a human self complete. So this all we have to write in Buddhism beta. Thank you so much.